find the largest element in an array. Basically, if you have array of certain numbers, this program will help us find the largest element. So for that, we need two concepts which we already used, loops and arrays. So let us try and understand how this particular program works. I just make sure that I have turned on the recording so that, yeah, it's getting recorded. Fine. So the program starts with include stdio.h, where we do the library inclusion. Then int main, where we start with the main loop. Now here there are two declarations, int I and n, where both I and n are two variables which are declared. उसके अंदर कोई value store नहीं हुई है. Then you declare a float array of 100. So basically it will start from ARR 0 and then it will go up to ARR 99. So total of 100. So these are the 100 variables of type float declared in a single statement by putting a square bracket. Then we ask user to enter a number of elements between 1 to 100, and then user scan whatever enters it's scanned and that number is stored into n. Now for I going from 0, I less than n, I plus plus. Okay, this is a standard way of writing any for loop. Now, if he has entered, let's say 45 or something, you can have n going up to 44. Then enter number. So you will directly do %d and scan it at I plus 1. This is what we have learned because of the pointer. You can directly store the element using @ that is address of array of I. So scanf में %f यूज किया क्योंकि हमने float declare किया था user entries के लिए. And once we do that, all the random numbers are entered by the user. In this example, user is entering 5 numbers. Now next part of the loop is to do the finding of the largest element in an array. So how we will do that? First we will declare int I equal to 1, then I less than n plus plus I. So this is a standard for loop which will take from I going from 1 to n. Remember, I is not starting from 0. Okay, it is starting from 1. Now what we are comparing is if ARR 0 is greater than ARR I. मतलब अगर first element जो largest है, let's say A first element की value है 45 और जिसके साथ कंपेयर होने वाला नंबर है वो 33 है. So what we are doing is we are just comparing, जैसे आपका अरे चालू हो रहा है 0 से और it is going up to some number. So you are comparing each and every number with A of 0 or ARR of 0. So अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अपने को स्टोर तो करना नहीं है. तो जब 45 33 से कंपेयर हुआ तो हमने बेसिकली कुछ नहीं किया. तो इस इफ का कोई एल्स नहीं है. पर अगर यहाँ पे 85 होता है तो वी आर जस्ट रिप्लेसिंग ARR of 0 विद दैट 85. इस प्रोग्राम का इसको हम डिस्ट्रक्टिव मेथड बोलते हैं. मतलब आप ARR of I को सीधा ARR of 0 पे राइट कर देते हो और ओरिजिनल ARR of 0 लॉस हो गया है. तो जब तक आपको सॉर्टिंग वगैरह नहीं करनी है, सिर्फ लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन अरे फाइंड करना है, यू कैन यूज दिस टेक्निक. दिस विल एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय. तो ये जो ओरिजिनल 45 था वो अब कहीं नहीं बचा मेमोरी में. यू हैव ओवर रिटन 85 ओवर दिस 45. ओके, and this way if you keep on doing, at the end of this loop you will definitely get your largest number at the output, and then you can print it with 2-digit decimal accuracy, and then your final value is returned. So this is the first program we are going to write today. User will enter 5 numbers, okay, starting from 34.5, 2.4, minus 35.5. Remember, plus and minus numbers are also compared, and finally you will realize that largest number is resulted, finally is thrown out. And you can remember आपने 0.2f दिया है तो भले ही आपने 38.7 की एंट्री मारी है पर आउटपुट पे वो 38.70 करके आया है. So it can run up to first 100 elements. If you want to do more, you just have to increase
increase this array size over here. Now, to find the largest number, let's understand what is happening in this program. First two elements of the array are checked, and the largest of these two elements are placed at ARR of 0. So ARR of 0 is assumed to be the place where we are going to keep the largest element. The first and third element are then checked. The largest of these two is then placed at ARR of 0. And this process continues until first and the last element is checked, and the largest number will automatically stored in ARR of 0. So for that, we have used only one for loop to accomplish this task. So I guess that is the first step where we are going towards sorting. Somebody asked in the beginning of the lecture that how to do sorting. So this is the first step where you can do a largest number to the smallest number sorting, what we call descending sorting. And then you can do a vice versa. Just greater than की जगह यहाँ पे अगर less than लिख देते तो ये same program हो जाता to find the smallest number in an array. Now, let's understand another program to calculate a standard deviation of 10 numbers. Now, what is the standard deviation? First thing, to understand the standard deviation, we need to understand C-based arrays, which we have already learned, and then how to pass a arrays as a function. So, calculate SD is the function that we are going to write, and we are passing an array to it. So those who are not sure with what is the standard deviation, let's understand. So if I say number 1, 2, and 3, now there is something called as average or mean of these three numbers. So mean कैसे निकालते हो आप? 1 plus 2 plus 3. ये हो गया sum of these three numbers divided by total numbers, that is 3. तो इसका mean जो है वो आ जाएगा 2. Okay. Now what is the standard deviation? That how far each number is from this 2, which is the center point. तो ये जो 1 है वो -1 apart है from the 2, और ये 3 जो है वो +1 apart है from this 2. So this is what we call a standard deviation. Now let's see how to achieve the standard deviation using programming. And for that we also need another library. हम तो हमेशा Apache library include कर लेते हैं, पर जो बच्चे मेरा कहा हुआ नहीं फॉलो करते, they will have to carefully observe कि ये correct library include हुई है कि नहीं. हाँ, जो मेरे स्टूडेंट्स है वो हमेशा सारे libraries डाल देते हैं. I know that is a bad way of programming, but उससे आपका कभी भी memory ज्यादा use हो जाता है, पर error नहीं आता. Okay, so it depends whether you want to be a optimal person or हमेशा minimum memory के code लिखो, which you will eventually do when you become mature enough in programming. But at the first year level, मैं तो हमेशा बोलता हूँ आप stdio.h, standardlib.h, string.h, mat.h, जो भी आपको पाथ लाइब्रेरीज बताया है conaio.h, वो सारे इंक्लूड कर दो, क्या फर्क पड़ता है. देन वी डिक्लेयर कि हम कैलकुलेट एसडी करके फंक्शन नीचे लिखने वाले हैं, जिसका टाइप होगा फ्लोट और उसको पास होगा फ्लोट टाइप का डेटा अरे. डेटा अरे का साइज अननोन रखते हैं, इसलिए हम सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज करके छोड़ देते हैं. देन वी स्टार्ट विद द मेन प्रोग्राम. नाउ इन द मेन प्रोग्राम, यहाँ पे पहली लाइन में हम इंट आई डिक्लेयर कर रहे हैं. अभी तक जो नए बच्चे उनको ये कमांड तो समझ में आ गया होगा कि इंट के आगे कोई भी वेरिएबल नेम लिखते हैं वैर, तो इस वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है और इंटरनली मेमोरी के 4 बाइट्स उसको अलोकेट हो जाते हैं, 4 या 2 बाइट्स डिपेंडिंग अपॉन विच वर्जन ऑफ सी प्रोग्रामिंग यू आर यूजिंग. एंड ऑल्सो देन वी गो फॉर द फ्लोट डेटा विद 10 नंबर्स. ओके, तो हम 10 नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने वाले हैं. We will ask user to enter the 10 elements. Then we start with for I going from 1 to less than 10, plus plus I. Then we do a scanf of data of I. Once we do that, we printf standard deviation. Then यहाँ पे 0.6 up to 6 decimal places accuracy float type से हम output display करने वाले हैं. And then calculate standard deviation का अलग function हमने use किया है. तो आप लोग पूछोगे कि इसकी जरूरत क्या थी, आप कैलकुलेट एसडी इधर ही कर सकते हैं. ऑब्वियसली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड. फर्स्ट थिंग इज फ्लोट calculate SD and you pass whatever data array you have stored in your data of I. Then float sum equal to 0, mean and standard deviation again starts with 0.
जैसे मैंने बताया पहले अपने को सम निकालना होगा, फिर मीन निकालना होगा, और फिर ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल पाएंगे. नाउ int I, just declare it, and that I will start from 0 and it will go up to 9 and plus I. तो बेसिकली हमने ये ऑपरेशन पहले भी बहुत बार देखा है. whenever we write sum plus equal to data of I, तो इससे हम लोग क्या अचीव कर लेते हैं कि हम sum equal to sum plus data, मतलब previous value of sum which actually starts with 0 and data of 0. so basically हम लोग यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन रीड करके स्टोर कर रहे हैं that will get displayed over here, and then mean equal to sum by 10. so हमने ये ऑपरेशन कंप्यूट कर लिया, मीन वैल्यू निकाल लिया. Now for standard deviation, what you have to do is again run the loop for all the values from 0 to 10, that is total 0 to 9, total 10 values, and plus I लिख दो यहाँ पे. Then SD plus, so हम SD plus में हम क्या कर रहे हैं, power of data I minus mean comma 2. so basically हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम मीन वैल्यू से डेटा वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका स्क्वायर लेके उसको ऐड कर रहे हैं. ठीक है, अब ये स्क्वायर लेके ऐड क्यों किया हमने, क्योंकि ये नंबर जब आपका 2 मीन आया था तो 2 माइनस 1 आप करोगे तो डिफरेंस आएगा 1, और 3 माइनस 2 करोगे तो डिफरेंस आएगा 1, करेक्ट. बट यू आर एक्चुअली कैरिंग आउट द ऑपरेशन डेटा ऑफ आई माइनस मीन. तो अगर डेटा ऑफ आई 1 है एंड देन यू डू -2, यू आर एक्चुअली losing the information about sign. so आपको -1 का डिफरेंस मिल रहा है. now deviation is only how far you can go. It doesn't matter on the left side of the 2 or on the right side of the 2. so that's why what we do, how you can avoid a sign with any number, you take a square of it, then take a square root of it. so that is what we are trying to do. so हमने पहले यहाँ पे स्क्वायर किया, ठीक है, फिर उसका स्क्वायर रूट किया जस्ट बाय डिवाइडिंग ऑल द एडिशन बाय 10. तो हमने मीन डिफरेंसेस लिए हैं एंड देन उसका रूट कर दिया. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन, समेशन देन डिवाइड बाय 10 एंड देन अंडर रूट. सो दिस पर्टिकुलर टर्म इज आल्सो कॉल्ड एज RMS, जो आप आगे जाके सीखोगे, which is also called as root mean square. so okay, I don't know, somehow this extra window pop up. okay, so the output looks like this. Enter elements, it starts from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and then the final deviation of this answer is 2.87. तो आप यहाँ पे ये ऑपरेशन करके देख सकते हो, 1 + 2 + ब्ला 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 करके जो फाइनल एवरेज आएगा अराउंड 5. ठीक है, then what you will do is you will subtract each and every number from 5. so 1 minus 5, 2 minus 5, 3 minus 5, and so on. and as you go ahead, when it crosses 5, ये 5 exactly नहीं आएगा, और when it crosses 5 पहले यहाँ पे नेगेटिव डिफरेंस आएगा, which can start from -4, -3, -2, -1 and so on. फिर 0 डिफरेंस आएगा और फिर पॉजिटिव डिफरेंस आएगा 1 2 3 4 and so on. then you take a square of it and do the sum. so हमने रूट मीन स्क्वायर में से स्क्वायर ऑपरेशन कर दिया. फिर हम उसका मीन कैसे लेंगे, मीन हमेशा जैसे लेंगे. so we will add all the squared terms and then we will divide it by number of terms, which will be 10 in this case. and then when we do that, final step is to take a root of it. so here the array containing 10 elements are passed to calculate SD function. this function calculates the standard variation using mean. so आप लोग there are different types of standard deviations. stdv.p, std, अभी हमने जो सीखा वो standard deviation regular definition से जो आता है वो है std.p. किसी ने एक्सेल में अगर standard deviation यूज किया है फंक्शन तो उसके अंदर यही प्रोग्राम लिखा रहता है. now let's try and understand a program to add two matrices using multi-dimensional array. so in this example we will learn how to add two multi-dimensional arrays together. for that, obviously the programming skills required are array and multi-dimensional arrays. so let us try and understand how we will add two matrices
first you will include standard stdio.h. Okay. In next line you declare the main function. Now third is you declare a integer where you need the first matrix where you call a. यहाँ पे जो array है इसको हम दो डायमेंशन में दे रहे हैं, तो it's a 2D matrix with 100 elements in each of them. Then there will be a b. Again उसमें भी 100 across 100 का space रख रहे हैं. Internally this space is blocked. This doesn't mean it's a matrix of 100 cross 100. And then since we are adding the two matrices, we need another matrix where we say sum of 100 cross 100. So basically here you are giving away the space of 100 into 100. That's a lot of space. Along with that, you need some other variables which I generally used to declare them as and when required. So R, C, A, I, J. ये मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि whenever you start programming, पहले तो आप सिर्फ A, B और sum ये तीन ही वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, और बाद में जैसे जैसे आगे आपको समझ में आता जाएगा कि नंबर ऑफ रोज यूजर से लेने हैं तो R वेरिएबल फिर बाद में यहाँ डिक्लेयर कर दो. Since it's a computer program, you don't have to know कि R आगे लगने वाला है initially. And whenever you require R, you make sure that you put that particular R there. Then number of columns भी अगर जानने हैं तो C यहाँ पे declare कर दिया. Then finally, we will ask user to enter the elements of the first matrix. Here, I want you to run from I equal to 0, I less than R, I plus plus, J equal to 0, J less than C, plus plus J. So I and J increment होते जाएंगे. यहाँ पे I plus 1 और J plus 1 जैसे यूजर एंट्री करते जाएगा और उसको हम स्टोर करते जाएंगे एम्परसैंड A of I and A of J में. Exactly same loop है except B of I and B of J. I know आप एक ही for loop में कर सकते थे, यहाँ पे दो for loop की जरूरत नहीं है, but that is fine क्योंकि उस केस में आपको पहले मैट्रिक्स का पहला 1,1 एलिमेंट एंटर करना पड़ता, फिर दूसरे मैट्रिक्स का 1,1 एलिमेंट. तो फॉर एग्जांपल आपका पहला मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स है आपका 4 5 6 8 whatever. तो बेसिकली इसका एडिशन जो होगा वो 1 plus 4 then 2 plus 5 3 plus 6 और 4 plus 8 होगा. So this is what we are trying to do, and for that again you can start another for loop. अब आप ये पूछोगे कि यहाँ आपने फंक्शन क्यों नहीं लिखा. So again I am telling you, until and unless somebody mentions you write a function or you see there is lot of same kind of operation happening again and again, then only please write a function. Otherwise always prefer a single main code. Okay, that is a good programmer sign. If you want to avoid the repetition, then only write a function. Otherwise don't complicate your program by writing hundreds of functions. They are not going to help, and they sometimes end up being infinite loops. So it is always better to write a straightforward program inside a main loop. So what happens in this addition of two matrices? Again कुछ नहीं हो रहा है, I और J जो है वो increment होते जा रहे हैं up to R and C, and then finally what you are doing is addition of corresponding element. जब I1 है तो दोनों तरफ का I1 है, और J अगर 1 है या 2 है तो दोनों तरफ का J सेम है. तो पहले 1,1 element will get added with 4, means another 1,1 of the second matrix, and then sum is also stored at 1,1. So इसका आंसर आएगा 5. Similarly second matrix तुम्हारा 1,2 तो 2 plus 5 ये 7 आ जाएगा, फिर 3 plus 6 ये 9 आ जाएगा, और फिर ये lastly 4 plus 8 ये 12 स्टोर हो जाएगा. So this is how the addition of the two matrices is happening. Once we do that, you can print the entire matrices using another for loop. तो यहाँ तक हमने कोड देख लिया था, उसके नेक्स्ट वाला पार्ट यहाँ से शुरू होता है. तो बेसिकली यहाँ पे हम I और J वापस R और C तक रन कर रहे हैं, एंड देन वी आर प्रिंटिंग सम ऑफ I, J. यहाँ पे एम्फेसेंड नहीं लिख रहे क्योंकि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट है. और फाइनली if J equal to C minus 1, you go to the next line. तो ये सिर्फ दिखावे के लिए, अदरवाइज आपका सारा मैट्रिक्स एक अरे की तरह दिख जाएगा 1 2 3 4, which is not correct. You have to go to the next line, and that's why /n is required here. So as soon as G reaches C minus 1, ये थोड़ा complicated है,
initially I would expect you to print only a straight line answer, but then you can realize कि C-1 जो है वो एक अरे मतलब कंप्लीट रो खत्म होने के बाद ही अपीयर होता है. So then you can hit /n and go to the next line. 2 बार /n देने का मतलब कुछ नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हो जाती है. तो एग्जैक्टली नेक्स्ट लाइन पे ना जाके एक पूरी स्पेस वाली लाइन आती है और फिर नेक्स्ट एलिमेंट दिखता है, तो मैट्रिक्स दिखने में अच्छा दिखता है. सो इस तरह से ये फाइनल एडिशन दिखेगा आपको. आउटपुट कुछ ऐसा होगा, एंटर एन number of rows between 1 and 100. Similarly, enter number of columns between 1 and 100. User has entered 2 and 3. Because typically users are also lazy, so don't expect anyone to enter 100 cross 100 ka matrix. Then it will ask for entry of element of the first matrix. A11 क्या है, A12 क्या है, A13 क्या है, फिर A21 क्या है, A22 क्या है और A23 क्या है. Similarly, B matrix क्या, and finally the answer matrix is generated. So in this program, user is asked for row and column, and then user is asked for individual elements with respect to rows and columns. Then we add the corresponding elements of the two matrices and saved as a third matrix, which is the final answer, whose dimension is also same to the first two matrices. अगर यहाँ पे दोनों matrices की dimension अलग है तो एडिशन जनरली करते ही नहीं है, क्योंकि वो लास्ट एलिमेंट में फिर पैडेड जीरोस का कंसेप्ट आ जाता है. सो रिजल्ट इज आल्सो प्रिंटेड ऑन टू द स्क्रीन. नाउ वी डू अ सिमिलर प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस यूजिंग मल्टी डायमेंशनल अरे. Here, user need to understand C arrays and multi-dimensional arrays. So in this program, we will ask user to enter the rows and columns of the two matrices. Now to multiply the two matrices, the number of columns of the first matrix should be equal to the number of rows of the second matrix. I don't know whether you have studied this into your maths, but basically, if you have first matrix of m cross n, then for multiplication, your next matrix should be n cross something, let's say n cross y. Then only your final resultant matrix will result from m cross y. तो ये जो बीच का n एलिमेंट है वो निकल जाता है और आपका फाइनल मैट्रिक्स जो होता है वो m cross y साइज का होता है. Then only two matrices elements are basically can be performed. And to get this, we have created three functions. Again, you will say why three functions, why not main function? Until and unless it is mentioned, don't go to create a functions. And if you feel by creating a function, your program is becoming very simpler or avoiding any repeated statements, then only you go for creating of a matrices. Okay. So get matrix elements will ask user to input the matrix element. Multiply matrices will multiply the two matrices, and display will finally result the matrices after the multiplication. So we will go one by one. First thing is stdr.h, where we include the library file. Now we will ask user to enter the matrices value. So int matrix. And now here you can ask for rows and columns from the user itself or the matrix. Now again remember, this is not a main function. यहाँ पे हमने कोई भी initial declaration of the function किया नहीं है, हमने सीधा function लिख दिया है. इस function को क्या क्या input आने वाला है? एक तो मैट्रिक्स, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स आने वाला है, फिर रोज और कॉलम्स कितने हैं उस मैट्रिक्स के वो आने वाला है. देन वी स्टार्ट विद द एक्चुअल फंक्शन, इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो यूजर को हमको एंट्री द एलिमेंट करने बोल रहे हैं हम, एंड देन इट विल स्टार्ट आस्किंग फॉर द वैल्यूज. ये अपना स्टैंडर्ड नेस्टेड फॉर लूप है, तो अब तक आपको ये बहुत बार देख के याद हो गया होगा कि हम लोग कैसे लिखते हैं. फॉर, ठीक है, उसके नीचे फॉर, then I going from 0, j going from 0, I less than let's say row, j less than column, and फिर I plus plus and then j plus plus. So ये सेम मैट्रिक्स हर बार लिखते हैं हम लोग जब तक 2 डायमेंशनल या मैट्रिसेस पे काम चल रहा है. जब आप 3 डायमेंशन पे जाओगे तो I, j और k भी आता है. एंड सिमिलरली यू कैन वर्क ऑन मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स, जो हम विजुअलाइज तो नहीं कर सकते लेकिन प्रोग्रामिंग में ये पॉसिबल है. यू कैन हैव n डायमेंशनल प्रोग्रामिंग हैपनिंग साइमल्टेनियसली. नाउ हियर again you will go on incrementing I and j as a display panel, and at the same time you will display
the scat result will be stored at the address of matrix of I comma j. Okay, so this particular matrix is not the first matrix or second matrix, it is in general a matrix definition. And then finally you will ask user to find out what is the size and return that particular matrix. Since it was rewritten on this particular same memory location, it can be accessed from there. So how you do a multiplication of the matrix? So in multiplication of the matrix, we require first matrices, second matrices, and then the result matrices. Now, integer R1, C1, R2, C2 are nothing but number of rows of first matrix, columns of second matrix, then rows of the columns of the first matrix, rows of the second matrix, and columns of the second matrix. आई नो ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट हो सकता है क्योंकि लंबे कोड शुरुआत में ही आ रहे हैं, बट आई थिंक प्रीवियस थियरी के हिसाब से इट शुड बी फाइन एंड इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल. दोपहर के वक्त में अगर आप आंखें खुले रख पा रहे हो तो मैं जो क्या बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा होगा. So for I going from 0, I less than R1, I plus plus. For J going from 0, J less than C2, J plus plus. यहाँ पे याद रखो कि हम लोग जो मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई मैट्रिक्स उसमें I और J वेरी कर रहे हैं फ्रॉम R1 टू C2, और जो भी वैल्यू है उसको हम रिजल्ट मैट्रिक्स में स्टोर कर रहे हैं. लेकिन ये ब्लैंक मैट्रिक्स है तो आप हमेशा रिजल्ट ऑफ I कॉमा J को 0 से इनिशियलाइज होते देखते हो. इसका रीजन यही है कि जैसे मैंने कहा कि पहला मैट्रिक्स अगर m क्रॉस n का है और दूसरा मैट्रिक्स n क्रॉस y का है, तो मुझे एक रिजल्ट मैट्रिक्स बनाना होगा जिसका साइज होगा m क्रॉस y, और वही चीज हम इस प्रोग्राम में कर रहे हैं. R1 जो है वो ये वैल्यू है और C2 जो है वो ये वैल्यू है. Now, once we get the matrix of the result matrix with all zeros, we can start doing the multiplication. So, in the multiplication, first thing what you have to do is again run a matrix which goes from I going from 0 to C1, J going from 0 to C2, and then there is a K which starts from 0 and go up to C1. Okay. Now you will see that first matrix का I comma kth element is red. Okay. और second matrix का k comma jth element is red. Now you will ask me, sir हमने R1 तो यूज किया, C1 यूज किया, C2 यूज किया, R2 क्यों नहीं यूज किया? तो उसका रीजन क्या होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में there are actually only three variables m n और फिर एन वाई. तो यहाँ पे देखोगे तो वेरिएबल एक m है, दूसरा n है और तीसरा y है. सो इट वाज एज्यूम बाय डिफॉल्ट कि ये दो वेरिएबल के लिए अलग से स्पेस लिखने की जरूरत नहीं, और इसी एक रीजन की वजह से हमारे यहाँ पे सिर्फ 3 फॉर लूप चले न कि 4. एंड सेम थिंग यू कैन सी कि k इज रिपीटिंग इन बोथ द केसेस. यहाँ पे भी फर्स्ट ऑफ k है और सेकंड ऑफ k है. So k is kind of common, which is of same size. Okay, and then once you do that, finally, once you have result stored at I comma jth location, you will display the final output matrix. Display में कोई बड़ा issue नहीं है. यहाँ पे हर जगह आप देखोगे तो ये दूसरा वेरिएबल 10 से डिक्लेयर किया है जिसकी कोई जरूरत नहीं होती. You can just open bracket and close bracket like this. क्योंकि वो सेकेंड डायमेंशनल में जाता है. और यहाँ पे आप देखोगे कि आपके रिजल्ट जो है वो रो और कॉलम तक रन हो रहे हैं और रिजल्ट जो है वो फाइनल डिस्प्ले किया जाता है. एंड आफ्टर एवरी कॉलम माइनस 1th एलिमेंट you hit slash n so that it goes to the next line properly. Now we start with the actual program. Here what we are doing is we are restricting the user to make an entry of 10 cross 10 matrices, and then result is also 10 cross 10. That initially this is what we define. Now this is just a array allocation. We haven't actually found what was the size of the first matrix. This is just we are holding up a memory space of 10 cross 10, that is 100 elements, and then whatever is the matrix size, let's say 2 cross 2, उसमें बस इतनी ही एंट्री भर जाएगी, बाकी सारी एंट्री ब्लैंक रह जाएगी. बट दैट इज फाइन. अगर आपको लगता है कि 10 से बड़ा मैट्रिक्स आने वाला है तो यू कैन ऑल्सो पुट 100 क्रॉस 100, इट डजेंट मैटर. बट टिपिकली इतनी सारी एंट्री कोई करते बैठेगा नहीं. नाउ वी विल आस्क यूजर टू एंटर द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स.
Similarly, we will ask user to enter the rows and columns of the second matrix. Just the two numbers are entered and those are stored as R1, C1, R2 and C2. Now, first, second, third, fourth, once we know, we have to check whether we can multiply them. So if C1 is not equal to R2, then you just ask user to enter again and show him the error message that number of rows and columns should match. And again, user enters the new value and you keep on doing this until you hit R1 equal to R2 equal to C1. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ही आप इस while loop से बाहर आ जाओ. Otherwise, you will hold user at that particular location. Then get matrix element. फर्स्ट R1 C1 के साथ आप एलिमेंट लेना स्टार्ट करोगे. सिमिलरली सेकंड मैट्रिक्स एलिमेंट R2 C2 के साथ सेकंड मैट्रिक्स एलिमेंट लोगे. और इसीलिए मैं जो बोल रहा था कि ब्रैकेट में 10 देना जरूरी नहीं है, पर हम 10 लिखे इसीलिए है कि हमने एस्यूम किया है कि यूजर की एंट्री जो है वो छोटे मैट्रिक्स की होगी, जैसे 3x3 वगैरह. हाँ, हम मैथ्स पेपर में भी कभी 15x15 का मैट्रिक्स सॉल्व नहीं किए, बट जनरली ये 5 के ऊपर जाता है तो वी जस्ट निग्लेक्ट इट एंड यूज द एक्सेल. बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आपको प्रोग्रामिंग से भी अगर कल 150 बाय 157 के मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करने बोल दूं and we have some data science guy who can do this all entry for us, we can do a programming for that also. Finally, you pass this function to multiplication matrix and then display result matrix and return 0. So very big program it was, but because of the functions it got simplified. This function is same again and it was worthwhile to write a function for this. I'm not sure about these two functions were required because initially it's not a repetitive action, it is only once happening. So personally, when I write a C program, I wouldn't have written these two functions. So here is how the output looks like. User has entered 2x3 matrix as the first matrix and 3x2 as the second matrix. So your final answer will be 2x2. Now the elements were 2, 3, 4, 53, 3, 5. So these are the first matrix element. The second matrix element are 3, 3, 5 and 0, 3, minus 3, 4. And finally your output came out to be minus 21, 22, 159 and 179. Now next program is to find a transpose of a matrix. Now I'm not sure whether you have studied this in your 12th or not. So again, the things that you require are array and a multidimensional array. A transpose of a matrix is a new matrix that is obtained by exchanging the rows and columns of an matrix. जो आपका मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये आपका मैट्रिक्स है तो आप ट्रांसपोज में क्या करते हो, 1 2 3 जो फर्स्ट रो है उसको आप फर्स्ट कॉलम लिख देते हो. देन 4 5 6 जो सेकंड रो है उसको आप सेकंड कॉलम बना देते हो. एंड 7 8 9 जो आपका थर्ड रो है वो आपका कॉलम बन जाता है. So this is the action that we want to take out. And again, user has to enter number of rows and C for number of columns of a matrix. And it should be less than 10 for this particular program. There is no such restriction. It is up to the user. And then user is asked to return the element whose size will be R cross C. So this is how a program looks like to take a transpose. What you have to do is a of ij should be replaced with a of ji. That's it. इतना सिंपल होता है. पर आप नया मैट्रिक्स इसलिए यूज करते हो कि आपने अगर पहला एलिमेंट ओवरराइट कर दिया तो एक्चुअल ए ऑफ जे आई पे जो था वो वापस दिखेगा ही नहीं, तो इसीलिए आप सेपरेट मैट्रिक्स क्रिएट करते हो. सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम लाइन बाय लाइन. First thing is stdio.h. So we have included stdio.h. Again, we ask user to enter. So we are taken a 10 cross 10 matrix of A, its transpose or the result matrix, and then number of rows, number of columns, and two variables which will run from I and J for your for loop. अगर ये यहाँ पे इनिशियलाइज किए तो नीचे आप फॉर लूप में इंट आई लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा i इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट है. मतलब मैं हमेशा डिक्लेरेशन ऊपर में पसंद करता हूँ बिफोर द प्रोग्राम, एंड देन यू जस्ट यूज दैट पर्टिकुलर वेरिएबल ड्यूरिंग द प्रोग्राम. Next is you will ask user to enter number of rows and columns and you will scan R and C.
Then you will ask user to enter the element. You will run your loop from I j. Again, I'm not repeating the same matrix again and again and again and again. अब बोर हो जाओगे और मैं भी बोर हो गया हूँ बोल बोल के. Then a of I comma j that we have stored. So this procedure is common for all the programs. Now here we start with the entered matrix display. So you can just run a loop. Again nested for loops. So for के अंदर for I going from 0, similarly j going from 0, I up to r, j up to c, plus I and plus j. You will print the entered matrix, and whenever, remember, if j of I is equal to c minus 1, you print it to a new line. Then how you will do the finding of a transpose? Basically, you run a loop from I to j, but just replace a of I comma j as a of j comma I. That's it. A simple operation will give you a final answer. And once you do that, next step will be you have to print that particular element. So to display that particular element, what you have to do is first you have to ask the transpose element. यहाँ तक program हम already देख चुके हैं. तो हमें एक transpose element जो है उनको display करने के लिए अभी I और J यहाँ से run करने होंगे. And while displaying, display I comma J in this way. Now there are some programmers who actually don't modify the matrix और just display जो कर रहे हैं उधर ही a of I comma j को interchange करके दिखा देते हैं, but that is not a good thing to do. You should always store it as a separate matrix and then you display. And this time आपको c minus 1 नहीं तो r minus 1 पे रुकना पड़ता है. That is the difference. और यहाँ पे भी देखो कि पहले हम r से खत्म करते थे, उसकी जगह पहले हम c से खत्म कर रहे हैं मैट्रिक्स और फिर r से कर रहे हैं. मैं कभी कभी इन आई और जे को भी इंटरचेंज कर देता हूँ ताकि लाइफ इजी रहे और यहाँ पे समझ आए कि ये जे टर्म है और ये आई टर्म है. बट दैट इज फाइन. दो बार दोनों चीजें रिवर्स करने का पॉइंट नहीं होता. आप आइदर सी और आर रिप्लेस कर दो या आई और जे रिप्लेस कर दो. So this is how the final answer will look like. User has entered 2 cross 3 का matrix. Then we have entered the element 140 minus pi 27, and then entered matrix got transposed as, you can see the first row become first column and then second row became second column. Now write a program to multiply the two matrices by passing a matrix to the function. So it's a very similar program that we have already learned. So I will just run through this program. So in this program, we ask user to enter the size of the matrix in terms of rows and columns. Then we ask individual elements of the rows and then finally displays the result. So to perform this matrix, we ask user to first enter the data, multiply matrix, and then display. Here you will see that stdio.h, we will have entered the first matrix data. Then this is the declaration part. तो यहाँ पे void main के ये सारे function जो है multiply matrix के and display matrix के ये हमने डिक्लेयर कर दिए. फिर मेन प्रोग्राम शुरू होता है जहाँ पे आप फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन, स्टोर्ड रिजल्ट, फर्स्ट रो कॉलम, सेकंड कॉलम और आईजे के डिक्लेयर कर रहे हो. ये हमने पिछले वाले प्रोग्राम में उनको R1, R2, C1, C2 कहा था, बट इट्स वन एंड द सेम थिंग. And then you know there are only three matrices that values the more. Then you will ask user to enter the first rows and columns of the first matrix and then second rows and columns of the second matrix. Once you do that, again you got the number. So जब तक column और first row का match नहीं होता, that is हमने last time देखा था कि C1 is not equal to R2, we continue doing this matrix, ask user again and again to enter the correct size matrix. Once he does that, then only you go to this enter data matrix. So enter data is a function that will call and ask user to enter the data. Then it will go for multiplication matrix where you pass the full first matrix, full second matrix, then multiplication function, first row, first column, second row and second column. I know out of the four, only three are required because we have already used a while loop, and make sure that user enters the correct number. And finally, call a display
and that's it. This is the end of the program. Inside the functions, you will see that similarly elements are taken, जैसे हम हमेशा लेते हैं. और आज हम जब तक ये प्रोग्रामिंग में करेंगे नहीं, आपको ये बहुत सिंपल लगता रहेगा. So once you actually do, you will understand कि ये कैसे काम करता है. And again, for the second matrix, you ask user to enter the values which he will enter. Once you complete that, you call for the multiplication matrix. I am going very fast क्योंकि ये प्रोग्राम जस्ट हमने सीखा है अभी. So अगर आपको कुछ डाउट है तो by the end of this lecture you can ask me. And then you call a multiplication function. ये हमने लास्ट टाइम नहीं किया था, हमने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया था. So उस मल्टीप्लिकेशन फंक्शन में क्या हो रहा है अभी, आप आई जे और के की तरफ जा रहे हो, ये मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था. एंड देन यू जस्ट मल्टीप्लाई आई के विथ के जे मैट्रिक्स. ओके, फर्स्ट मैट्रिक्स का आई के एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स का के जे एलिमेंट मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर जो है वो आई जे पे स्टोर करते हैं. एंड वंस यू डू दैट, आउटपुट मैट्रिक्स में आपको बस प्रिंट करना है. सो आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम अगेन एंड अगेन ऑन द सेम प्रोग्राम. And this is how the output of the matrix looks like. User has entered 3 cross 3, I guess 3 cross 2, and then 3 cross 2. तो error throw किया उसने. Again user has entered 2 cross 3 and 3 cross 2. So that makes sure that आपका final matrix जो है वो 2 cross 2 का होगा और ये बीच का 3 discard हो जाएगा. And then user entered the first matrix, user entered the second matrix, and user got output for the 4 elements 24, 29, 6 or 25. Now I will stop here. Then we will study about how to access the RM elements using the pointers. By that time you can start with the programming on these things. First program you have to write is to find the largest number in an array. And if you have any doubts you can ask me now.